आज हम डिस्कस करेंगे रोटर डायनामिक्स पार्ट 19 जनरल मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग क्रिटिकल स्पीड्स फॉर सिंपली सपोर्टेड रोटर with both side overhung. General methods for critical speeds for flexible rotor was written by Melvin Proel in 1945 और जितने भी ये डेवलपमेंट हुआ है फॉर कैलकुलेटिंग द critical speed is based on his works और his methodology. की फीचर क्या है? Rotor is considered flexible and this methods provides you first critical speed, second critical speed and higher modes of critical speeds. The accuracy of critical speed is very high and disk mass is considered as a point mass. That means moment of inertia of disk is neglected. अभी शाफ्ट स्पैन को समझना जरूरी है. There are three spans. Span 1 between the left hand overhang, दूसरा जो स्पैन है बिटवीन द बेरिंग्स एंड तीसरा जो स्पैन है ऑन राइट हैंड ओवरहंग. सो सिंपली सपोर्टेड अगर है तो नंबर ऑफ स्पैन्स विल बी 1 बिटवीन द बेरिंग्स. सिंपली सपोर्टेड विथ वन साइड ओवरहंग है तो नंबर ऑफ स्पैन 2. एक होगा बिटवीन द बेरिंग्स एंड दूसरा होगा वन साइड ओवरहंग. एंड सिंपली सपोर्टेड विथ बोथ साइड ओवरहंग नंबर ऑफ स्पैन शाफ्ट स्पैन 3 होगा. वन होगा लेफ्ट हैंड ओवरहंग, दूसरा होगा बिटवीन द बेरिंग्स एंड तीसरा होगा राइट हैंड ओवरहंग. अभी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में समझ लेते हैं. ये शियर फोर्स एट स्टेशन एन ऑफ द शाफ्ट, हमने एन स्टेशन सपोज कंसीडर किया है तो nth स्टेशन पे शियर फोर्स को हमने डिनोट किया है वी एन. तो वी एन इजकल टू वी एन माइनस वन प्लस एम जो कि मास है उस स्टेशन का एम n minus 1 into omega square into y n minus 1. Bending moment at station n, mn is equal to m n minus 1 plus vn into ln. l क्या है? शाफ्ट लेंथ है ऑफ दैट सेक्शन एट nth स्टेशन. लेंथ एट स्टेशन n, सॉरी स्लोप एट स्टेशन n, theta n is equal to theta n minus 1 plus beta n into bracket start m n minus 1 upon 2 plus m n by 2 bracket close. Deflection at station n yn is equal to y n minus 1 plus theta n minus 1 into ln plus बीटा n होगा यहाँ, बीटा n यही बीटा n होगा यहाँ, नहीं मिसिंग है यहाँ. सो बीटा n into bracket start m n minus 1 upon 3 plus m n upon 6 bracket close into ln, where I n है, ये in नहीं है. I in is area moment of inertia at station n, which is written as pi into 64 upon d to the power 4 मीटर, m to the power 4 यूनिट हो गया. d क्या है? शार्प डायमीटर एट स्टेशन n, उसको मीटर में लिखा है. E यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन पास्कल. एल एन क्या है? शाफ्ट लेंथ एट स्टेशन एन मीटर में. एंड बीटा एन क्या है? शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी कांस्टेंट एट स्टेशन एन व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एट एल एन अपॉन ई इंटू आई एन ब्रैकेट क्लोज. यूनिट क्या? 1 अपॉन न्यूटन मीटर. तो ये जनरल इक्वेशन हो गया शियर फोर्स का, बेंडिंग मोमेंट का, स्लोप का एंड डिफ्लेक्शन का एट स्टेशन एन ऑफ द शाफ्ट. बाउंड्री कंडीशन एट स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन फॉर स्पैन 1. स्पैन 1 क्या है? 0 से 10 स्टेशन लेफ्ट हैंड ओवरहंग के लिए है. तो बाउंड्री कंडीशन एट स्टार्टिंग स्टेशन फॉर द स्पैन 1, k into y0 is equal to
minus v0, this is equation 1. C into theta 0 is equal to m0, which is equation 2, where k and c are stiffness constants which specify elastic resistance on the shaft by the supporting bearings. तो ये फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड के केस में shaft end is completely free, तो k is also 0 and c is also 0. तो from equation 1 and 2, v0 is 0 and m0 is 0. तो वेरिएबल क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे डिफ्लेक्शन एंड स्लोप. तो स्पैन 1 के लिए स्टार्टिंग स्टेशन इज फ्रॉम फ्रेंड and so the following assumption for part 1. Shear force at station 0, V0 is 0 Newton. Bending moment at station 0, M0 is 0 Newton meter. Slope at station 0, theta 0 is 0 constant, and deflection at station 0, Y0 is 1 meter, which is assumed. Now span 1 static station is from friend, and so the following assumption for part, oh yeah, by mistake 1 likha hai, it should be 2. Part 2. Please consider part 2. Shear force at station 0, V0 is 0 Newton. Bending moment at station 0, M0 is 0. And slope at station 0, theta 0 is 1, which is constant. And deflection at station 0, y0 is 0. तो ये span 1 का part 1 का ये assumption होगा, span 1 का part 2 का ये assumption होगा, initial condition assumption. अभी mode shape for span 1 and bending moment and slope at the common point of span 1 and 2, that means station number 10 के लिए. Shear force, bending moment, slope and deflection at any point in the span is a linear function of four assumed quantities at left hand end of the span, that is station or point 0. So deflection at the point n in a span yn is equal to an v0 plus bn m0 plus cn theta 0 plus dn y0, where an, bn, cn and dn are numerical constant. Deflection of the shaft yn is equal to y1 part 1 into y0 plus y1 part 2 into theta 0, which is equation 3. When n is equal to 10 of the span 1, तो इस पे बेरिंग हो जाएगा, यहाँ बेरिंग है 10 पे, तो डिफ्लेक्शन 0, तो yn is equal to 0 and corresponding yn part 1 is equal to y10 part 1 हो जाएगा and y1 part 2 is equal to y10 part 2 हो जाएगा. तो y0 is equal to minus y10 part 2 into theta 0 upon y10 part 1. Replacing y0 in equation 3, general equation for shaft deflection, yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1 bracket close into theta 0. Assume theta 0 is 1. So mode shape yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y10 part 2 upon y10 part 1 bracket close. This is equation number 4. तो ये हो गया आपका मोड शेप फॉर span 1. Now bending moment mn is equal to mn part 1 into y0 plus yn mn part 2 into theta 0, which is equation number 5. Replacing y0 in equation 4, general equation for the bending moment will be mn is equal to mn part 2 minus, sorry, bracket start mn part 2 minus mn part 1 into y10 into part 2 upon y10 part 1 bracket close into theta 0. As theta 0 is 1, so mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into y10 into part 2 upon y10 part 1 bracket close. तो bending moment at station 10
which is M10 is equal to M10 part 2 minus M10 part 1 into Y10 part 2 upon Y10 part 1 bracket close. Similarly, slope at station 10, theta 10 is equal to bracket start theta 10 part 2 minus theta 10 part 1 into Y10 part 2 upon Y10 part 1 bracket close. तो ये बेंडिंग मोमेंट का एट स्टेशन 1 का हो गया एंड ये स्लोप का थीटा 10 का हो गया एट स्टेशन 10 और ये आपका हो गया शार्प displacement for span 1 ka equation. So these three equations are very important. Boundary condition at common point of span 1 and 2 and a starting point of span 2. तो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉमन पॉइंट 10 का और स्पैन 2 का स्टार्टिंग कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन फॉर स्टार्टिंग स्टेशन फॉर स्पैन 2 k y10 is equal to minus v10 equation 6 c theta 10 is equal to m theta 10 equation 7 where k and c are the stiffness constant. Simply supported end के लिए क्या होगा bearing is infinitely stiff against displacement of the shaft but no resistance to tilting of the shaft. So k is infinite and c is 0. So y10 is 0 and m10 is 0 as from the equation 6 and 7. Boundary condition at common point for a span 1 and 2 due to shaft continuity and common station is as a 10. So y10 of span 2 is equal to y10 of span 1 equation number 8. Sorry. Theta 10 of span 2 is equal to theta 10 of span 1 is equation number 8. Y10 of span 2 is equal to Y10 of span 1 equation number 9. Due to bearing reaction in common station as 10, K Y10 is equal to minus bracket start V10 span 2 minus V10 span 1 bracket close equation number 10 and C into theta 10 is equal to bracket start m10 span 2 minus m10 span 1 bracket close equation number 11 where k and c are a stiffness constant. At bearing k is infinite and c is 0. So condition at a common point of span 1 and 2 from equation 8 through 11 we can write theta 10 of span 2 is equal to theta 10 of span 1 and y10 of span 2 is equal to y10 of span 1. M10 of span 2 is equal to M10 of span 1. Now start span 2 starting station is from the bearing and so the following assumption for part 1. Shear force at station 10 V10 is equal to 1 Newton. Bending moment at station 10 M10 is equal to 0 Newton meter. Slope at station 10 theta 10 is equal to 0 constant. Deflection at station 10 Y10 is 0 meter. This is part 1. Now part 2. Span 2 and starting station is from the bearing and so the following assumption for part 2. Shear force at station 10 V10 is 0 Newton. Bending moment at station 10 M10 is equal to M10 of span 1 in Newton meter. Slope at station 10 theta 10 is equal to theta 10 span 1 constant and deflection at station 10 y10 is equal to y10 of span 1 which is 0 meter.
सो ये पार्ट 1 का इनिशियल कंडीशन एजम्पशन हो गया, ये पार्ट 2 का इनिशियल कंडीशन हो गया। अब मोड शेप ऑफ स्पैन 2 and bending moment and slope at the common point of span 2 and 3. Deflection of the shaft yn is equal to yn part 1 into v10 plus y1 part 2 into theta 0, equation number 12, where n is equal to 20 of span 2. Yn is 0 because at 20 there is again bearing, so deflection will be 0. So yn is 0, then y1 part 1 is equal to y20 part 1 and y1 part 2 is equal to y20 part 2. So v10 is equal to minus y20 part 2 into theta 0 upon y20 part 1. Replacing v10 in equation 12, general equation for shaft deflection, yn is equal to yn part 2 bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close into theta 0. Assume theta 0 is 1. Mode shape for span 2 yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close. Bending moment mn is equal to mn part 1 into v10 plus mn part 2 into theta 0, equation number 14. Replacing v10 in equation 14, general equation for bending moment is equal to mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into v y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close theta 0. As theta 0 is 1, so mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close. So bending moment at station 20, m20 is equal to bracket start m20 part 2 minus m20 part 1 into y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close. Similarly, slope at station 20, theta 20 is equal to bracket start theta 20 part 2 minus theta 20 part 1 into y20 part 2 upon y20 part 1 bracket close. तो ये दो तीन इक्वेशन मोड शिप for span 2, bending moment at station 20 and slope at station 20, these three equations are important. Boundary condition at common point of span 2 and 3 and a starting point of span 3. Boundary condition for a starting station for span 3. ky20 is equal to minus v20, equation number 15, and c theta 20 is equal to m20 is equation number 16, where k and c are a stiffness constant. Simply supported end bearings are infinitely stiff against displacement of shaft, but no resistance to tilting the shaft. So k is infinite and c is 0. So y20 is 0 and m20 is 0 as per equation number 15 and 16. Due to shaft continuity and common station as 20, theta 20 span 3 is equal to theta 20 of span 2, equation number 17. Y20 span 3 is equal to y20 of span 2, equation number 18. Due to bearing reaction and common station as 20, k into y20 is equal to minus bracket start v20 spans 3 minus v20 span 2 bracket close, equation number 19, and c into theta 20 is equal to bracket start m20 span 3 minus m20 span 2 bracket close to equation number 20. At bearing k is infinite and c is 0, so condition at common point of a span
By mistake it is written 1 and 2. It should be 2 and 3. From equation 17 through 20 we can write theta 20 span 3 is equal to theta 20 span 2, y20 span 3 is equal to y20 span 2, m20 span 3 is equal to m20 span 2. So for a span 3, starting station is from the bearing, and so the following assumption for the part 1. Shear force at station 20, V20 is 1 Newton. Bending moment at station 20, M20 is 0 Newton meter. Slope at station 20, theta 20 is 0 constant. Deflection at station 20, Y20 is 0 meter. Now for the part 2, span 3 starting station is from the bearing, and so the following assumption for the part 2. Shear force at station 20, V20 is 0 Newton. Bending moment at station 20, M20 is equal to M20 of span 2 in Newton meter. Slope at station 20, theta 20 is equal to theta 20 of span 2 constant. Deflection at station 20, y20 is equal to y20 of span 2, which is 0. So these are the initial condition for part 1, and this is for part 2. Mode shape and bending moment at the last station for span 3. Shear force at infinitesimally small distance beyond its last station 30, and we can say V31 is equal to V31 part 1 into V20 plus V31 part 2 into theta 0, which is equation number 21, where station 31 is infinitesimal distance beyond station 30 at free end for span 3. So 30 के बाद slightly beyond का station हमने zoom किया, which is station number 31. So but 31 V31 is 0, and so we can write V20 is equal to minus V31 part 2 into theta 0 upon V31 part 1. Deflection of shaft yn is equal to yn part 1 into V20 plus yn part 2 into theta 0, which is equation number 22. Replacing V20 in equation 22, general equation for shaft deflection, yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into V31 part 2 upon V31 part 1 bracket close into theta 0. Assume theta 0 is 1. Mode shape yn is equal to bracket start yn part 2 minus yn part 1 into V31 part 2 upon V31 part 1 bracket close, equation number 23. Bending moment mn is equal to mn part 1 into V20 plus mn part 2 into theta 0, equation number 24. Replacing V20 in equation number 24, general equation for bending moment, mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into V31 part 2 upon V31 part 1 bracket close theta 0. Assume theta 0 is 1. Mn is equal to bracket start mn part 2 minus mn part 1 into V31 part 2 upon V31 part 1 bracket close. So bending moment at station 30, M30 is equal to bracket start M30 part 2 minus M30 part 1 into V31 part 2 upon V31 part 1 bracket close. So mode shape equation, ये equation important है, और bending moment at M30. So when M30 is 0, corresponding rotational speed is critical speed. अभी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. Rotor is simply supported at both ends bearings. Simply supported both side overhung, not the bearing. You should both side overhung, by mistake written bearings. There is a load of 500 kg at the mid span between two bearings. Density and elasticity of the shaft is 7.85
into 10 to the power 5 kg per meter cube and 2.1 10 to the power 11 Pascal respectively. Shaft diameter is 0.165 meter and shaft length between the bearings is 1.8. Shaft length on left hand free end from the left hand bearing is 1.8 meter and shaft length from right hand free end to the right hand bearing is also 1.8 inch. Calculate the first strain, second and third critical speeds. तो ये शाफ्ट अरेंजमेंट है बिटवीन द बेयरिंग्स में सेंटर में 500 kg का लोड है, लेफ्ट हैंड में भी 1.8 मीटर, राइट हैंड में 1.8 ओवरहंग है, टोटल लेंथ 5.4 मीटर है। इसको हमने 3 सेगमेंट में बांटा। लेफ्ट हैंड को पार्ट 1 बोला, स्पैन 1, बिटवीन द बेयरिंग्स को स्पैन 2 बोला है एंड राइट हैंड वाले को हमने स्पैन 3 बोला है। सॉल्यूशन क्या कैसे करेंगे? Actual rotor needs to be transferred into idealized equivalent system consisting series of discs connected with elastic but massless shaft. Mass of disc is chosen as to approximate mass of the actual rotor. Mass moment of inertia of disc is treated as negligible so that disc mass to be treated as a point mass. तो आगे कैलकुलेशन किया है, इस पे assumed frequency रखा है and this is the 3 segment और 3 span। यहाँ से यहाँ जो है स्पैन 1 है, स्टेशन फ्रॉम स्टेशन 0 से 10 एंड 10 से लेकर के 20 स्टेशन 2 है जो कि बिटवीन द बेयरिंग्स है एंड 20 से लेकर 30 वाला जो है स्पैन 3 है। 31 को हमने कैलकुलेट किया है शियर फोर्स फॉर स्पैन 1 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिए विथ इनिशियल एजम्पशन एंड आप देख सकते हैं सेंटर में हमने 500 kg का वेट डाला है, ऑल वेट कुछ नहीं है एंड शाफ्ट का डायमीटर, शाफ्ट का सेक लेंथ और शाफ्ट का जो वेट है बिकॉज ऑफ डेंसिटी एरिया एंड लेंथ उसको हम ट्रांसफर कर दिए डिफरेंट स्टेशन पे। फिर हमने शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी कैलकुलेट किया है और यहाँ से विथ इनिशियल एजम्पशंस फॉर पार्ट 1 पार्ट 2 से कैलकुलेशन करते गया है। जब इस सेक्शन पे आता है तो इस पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए निकालने के लिए 1 का डिटेल इंफॉर्मेशन बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स दिया है, जैसे यहाँ डाला है। फिर कैलकुलेशन करते गए हैं और यहाँ जब आता है तो स्पैन 3 के लिए बेंडिंग मोमेंट 2 का डाला और शियर फोर्स स्लोप भी स्पैन 2 का डाला है एट स्टेशन 20 के लिए। तो विद ऑल द कैलकुलेशंस द बेंडिंग मोमेंट एट स्टेशन M30 इसी को यहाँ ट्रांसफर किया है। तो अगर जब स्पीड 126.130 होता है रेडियन पर सेकेंड तो उस समय बेंडिंग मोमेंट जो है एट M30 ऑलमोस्ट 0 हो जाता है एंड उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड जो होता है फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड 1204 RPM हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड हो गया। इसका मोड शेप देख लीजिए, फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड का मोड शेप कैलकुलेशन वैसे ही करना है। 3 सेगमेंट का जो मोड शेप था उस हिसाब से आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, फर्स्ट स्पैन के लिए, सेकंड स्पैन के लिए एंड थर्ड स्पैन के लिए। तो इस तरह से आपका मोड शेप आता है फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड का। सिमिलरली हायर स्पीड डाला, फ्रीक्वेंसी डाला है 178.138 डाला तो भी आपको जो बेंडिंग मोमेंट एट M30 0 होता है एंड करस्पॉन्डिंग क्रिटिकल स्पीड 1701 RPM आ गया। इसका मोड शेप देख लेते हैं, इसका मोड शेप इस तरह से आता है, ये सेकेंड क्रिटिकल स्पीड का मोड शेप हो गया। सिमिलरली जब हमने 459.296 फ्रीक्वेंसी डाला रेडियन पर सेकेंड तो करस्पॉन्डिंग थर्ड क्रिटिकल स्पीड जो हो गया 4386 RPM एट दिस बेंडिंग मोमेंट एट M30 0 और इसका मोड शेप हम देख लिए तो इस तरह से आ गया। तो ये थर्ड क्रिटिकल स्पीड का मोड शेप है एंड दिस इज अ मोड शेप, नोट द
एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रोटर। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया फर्स्ट क्रिटिकल स्पीड, सेकंड क्रिटिकल स्पीड एंड थर्ड critical speed using the general methods. So thank you for